ma'am. Hello, Sachin. Hi, Lavin. Hi, ma'am. Hi, Lavin. Hi, Sachin. Yeah. Good to So, see you guys. yeah, same here. So, welcome back to our another episode. That is episode two on a YouTube channel, Beyond the Ranks. So, thank you so much, ma'am, for taking out time from your busy schedule and giving us giving us an opportunity where we can interact and we can help our viewers to get the most out of your experience. So, it's an honor to have you on our platform. Thank you, Lavin. I think it's the same from my side. I am going to enjoy this podcast for sure. Yeah. So, ma'am, I think we should start. So, my first question would be, you can directly start by, telling our audience about your introduction, about your academic background, and about your current role in your current organization. Sure. Sure. So, hi everyone. Myself, Yukti Mehta. I am a mother of 10 months old baby boy. And so, coming to my credentials, I have completed my bachelor's in computer science from Indira Gandhi Delhi Technical University. And then I joined master's program in NIT Jalandhar. For that, I gave GATE exam. So through that, I got admission in NIT Jalandhar Information Security course. This was a 2-year MTech program. And post that, I have been into this industry corporate world. I have been a part of 3 organizations so far. Uh, four maybe because I have been an intern as well in another organization. So yes, I started my career from PwC, one of the big fours, and I worked as a consultant over there. Then I spent around 2 years there. Then I moved to an IP firm, Clarivate, and I was there for 3 years. And then post that, I am into market research, secondary research. I am senior market research specialist at Gartner. So yes, since 2022, I am in Gartner only. Okay, great, great. So yeah. सो लाइक जो अगर कोई व्यूअर हमारी लाइक इंट्रोडक्शन ही देख रहा है ना, सो ही विल बी यू नो टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर क्रेडेंशियल्स ओनली, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग आपका क्रेडेंशियल पैक है, बिग फोर, फिर टॉप आईपी कंपनी, फिर उसके बाद गार्टनर. सो इम्प्रेसिंग प्रोफाइल मैम. Yeah, moving on to a second question. So ma'am, as you told that you have pursued your BTech and then you did MTech from NIT Jalandhar. So ma'am, जब आप बीटेक के फाइनल ईयर में थे, so you never thought of sitting into the placement drive on campus placement back in 2015 I guess. या फिर आपके like you have had that clarity in mind कि यार मुझे तो बीटेक के बाद गेट एग्जाम में अपीयर होना है, तो वो क्या थॉट Mhm, प्रोसेस था? mhm. I think that's a great question, Lavin. So this was back in 2014 when I was in third year. So Okay. during that time only you have to take a cautious call whether you want to, sit for the placements that are going to, take place in the next year, or you are going to have another, master's degree. So be it MBA, be it MTech, be it MS. So in third year only, I thought of, joining the MTech program. I had no inclination towards MBA because at that time I thought I was not the right fit for the corporate world. I thought I should be, going into the teaching domain, and I should, join some university and be an assistant professor over there. Okay. With that thought at that time, I thought to, get more confidence on my studies, and that is why I thought of joining GATE. That is why I thought of joining actually Made Easy. So post joining Made Easy, I actually enjoyed learning those subjects because during our BTech days we are little casual about our course and curriculum. So I was not that though I got decent marks, but I did not have that kind of understanding of the subjects. So for that reason, I thought of joining Made Easy. That will also help me because obviously one has to have a safety net. If you do not crack gate, then what? Hmm. So obviously to have a safety net, I thought to sit in placements as well. I could not crack first few companies, and then TCS
came into our campus and I was selected for that. So this was like a TCS was my only safety net. But then post getting TCS offer letter, I did not look back and I did not sit into any placements, be it any organization that came into my campus. I only, I was only focused and, concentrated for the GATE exam that was going to happen in 2015. Okay. But with that reason as well, I never thought of joining corporate world. That was another miracle that happened. Okay. Okay. सो मैम मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. ये ना मैंने भी खुद फील किया लाइक व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर आई वाज स्टक. और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि यार आई हैव वर्कड इन एन एडटेक कंपनी पोस्ट माय बीटेक फॉर कपल ऑफ मंथ्स. सो मैं भी बहुत कंफ्यूजन में रहता था कि यार क्या मुझे एमटेक के लिए प्रॉपर ट्राई देना चाहिए या फिर मेरे को एमबीए करना चाहिए. तो इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मैं एमटेक ही करूंगा. बट अभी भी लाइक जैसे लिंक्डइन पर मेरे पास बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आते हैं जूनियर्स के कि विच इज द बेटर करियर ऑप्शन लाइक आफ्टर बीटेक एमबीए इज अ मच बेटर Hmm. ऑप्शन और परसुइंग एमटेक. वो Hmm. वो डिबेट हमेशा रहती है. उस पर आपका क्या थॉट Right. प्रोसेस है? That is like a debate of Delhi versus Mumbai, which is a better city, I think. And जो जहां पर है उसको वो अच्छा लग रहा है. और अगर ऐसा लग रहा है then that is the best for that person. अगर ऐसा नहीं लग रहा है then that is a red flag. आपको कुछ और सोच लेना चाहिए. Please don't waste time on it. So I have people around me जिन्होंने एमटेक नहीं किया, वो श्योर थे उन्हें एमबीए ही करना है. देयर आर पीपल अराउंड मी जो श्योर थे उन्हें एमबीए नहीं करना है, एमटेक ही करना है. आई थिंक दैट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस और ये एक आपका इंक्लिनेशन होता है दैट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर हेड कि आपको एमबीए करने का इंक्लिनेशन आ रहा है, यू वांट टू गो इनटू सम मार्केटिंग और मैनेजमेंट और फाइनेंस प्रोफाइल. और या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आई शुड बी ओपन टू सम यूनिवर्सिटीज प्रोफाइल्स लाइक प्रोफेसर रिलेटेड प्रोफाइल्स, ऐसा भी कुछ आपको ऑप्शन हमेशा अपने लिए ओपन रखना है, देन ऑब्वियसली एमटेक इज अ वेरी गुड चॉइस. बट अब एमटेक काफी इवॉल्व हो गए. दिस वाज व्हेन मतलब मैं थॉट आई थॉट कि अगर मैं एमटेक करूंगी तो सिर्फ मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक ऑप्शन होगा. बट अब जब लोग एमटेक कर रहे हैं, इवन आईआईटीज तो एमएस की डिग्री देते हैं काफी आईआईटीज. तो वहां तो कंपनीज जैसे बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आ रही हैं वैसे एमटेक स्टूडेंट्स के लिए आ रही हैं. सिमिलरली व्हेन आई वाज इन एनआईटी जलंधर, तो वहां पर भी जो बीटेक सीएससी के लिए ओपन थी प्रोफाइल्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे थे दे वर सिटिंग फॉर दीज प्लेसमेंट्स, उतना ही सेम हमको भी एक्सपोजर मिल रहा था. तो आई थिंक एमटेक इज समथिंग जो अब काफी ज्यादा इवॉल्व कर गया है. एंड एमटेक का एक सबसे प्लस जो मुझे लगता है कि हो सकता है एमबीए ग्रेड को टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, बट द नीड ऑफ द आर इज कि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी ही चाहिए, चाहे आप मैनेजेरियल प्रोफाइल पर भी हैं. योर रिपोर्टीज डू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम टेक्निकल if you're working on a technical project, so my manager should have a sound knowledge about it. It will be very difficult for a reportee to have a manager जिनको basic से बताना पड़ रहा है. So it is always a good to have understanding of what we studied in our BTech. Okay. So MTech gives you that kind of confidence. Okay. Got it. So one thing I would also like to add on to your suggestion, based on my past experience, like I completed my MTech from NIT Surathkal, Karnataka, from 2020 to 2022. So मैंने भी वहाँ पर काफी लोगों से बात की अलग अलग ब्रांचेस से. लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम बायोटेक इंडस्ट्री, सो आईटी सेक्टर, सिविल और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के. तो उनका भी यही थॉट प्रोसेस था कि जो लाइक बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं एमटेक के साथ. पहला मतलब गेट गेट देने का कि एक तो एमटेक में फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है और आजकल बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है. प्लस फीस इतनी ज्यादा नहीं होती. और लास्टली ये भी है कि जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक की होती है और उनको ये प्रिविलेज नहीं होता कि उनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, तो रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर कैट, और क्योंकि कैट की कोचिंग की फीस भी ज्यादा होती है, प्लस एमबीए भी एक कॉस्टली डिग्री है.
तो उस केस में एम टेक के भी अपने ओन एडवांटेजेस हैं. दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द टाइम. या. Fair And point. like one more thing, like one more thing, like whenever we choose between MTech and MBA, like the first criteria we choose is what is the scope after the MTech or MBA, and what will be the salary package we will get after MTech or MBA. Ma'am, are there any other criteria through which we can also choose between MTech and or MBA? I think Sachin, yes, you have already listed a few of the criteria, but my only gut is that what you want, you should Hmm. decide. Hmm. Some people are like, so one basic thing that I have observed around myself is, let's say if you are BTech in mechanical, Hmm. we are very naive when we join BTech. During Hmm. Yeah. those 4 years, we become really mature. We understand this is something that I really want to continue, or this is Hmm. something that I do not want to continue. Hmm. If you Hmm. want to continue, go for Hmm. MTech. If you do not want to continue and you just want to do this, do null and void, Hmm. then go for MBA. So, for Hmm. example, if I am not very much interested in reading more about my BTech curriculum, Hmm. obviously, why would I want to do an MTech degree, Absolutely. right? So, yes, I think then it becomes fair for someone who does not, have interest in what they have studied for like 4 years. Then why should they spend another 2 years on it? Mhm. Hmm. Got it. Exactly. So मैम, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. लाइक मेरा रूममेट और मेरे काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स भी कंसल्टिंग डोमेन में भी काम कर रहे हैं. दे आर करंटली वर्किंग इन बिग फोर्स. सो लाइक अगर मैं उनसे जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, तो दे आर ऑलवेज इंगेज्ड इनटू ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. और बाहर से देखने में कंसल्टिंग फील्ड बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है. सो लाइक यू हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इनटू दिस डोमेन, और आपने बहुत क्लोजली काम भी किया और देखा भी है ये फील्ड इवॉल्व होते हुए. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस की, लाइक टेल आवर व्यूअर्स अबाउट अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ कंसल्टेंट, कि कैसा होता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहती है, थोड़ा उसे ब्रॉडर लेवल पर आप थोड़ा एक्सप्लेन करो. So, consulting एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन नहीं है. इट्स वेरी रैंडम. योर डे इज वेरी रैंडम, स्पेशली अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल पर हो. अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल पर हो तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू आंसर क्लाइंट कॉल्स, एंड जो आपके मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके केपीआईज हैं, आपको उनको भी मीट करना है एट द सेम वेरी टाइम. तो आपको दो पैरेलल ट्रैक्स को लेके चलना है अगर आप कंसल्टेंट हैं. So in my case, I was deployed at a client's site, and my client was a government client. So क्योंकि हमारा जो line of service था, that was GNPS, government and public sector, Okay. and उसमें हम जो इंडिया के गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, हम उनको सर्व करते हैं. Mhm. So उसमें क्या रहता है कि आपका पूरा दिन is more about understanding what your client is asking. They may say it or they may not say it. You have to be like uh, alert enough or intellectual enough कि आपको वहां पर वो उस instant पर what you have to say, what you have to speak, what you have to think, you should be very confident about it. That is how my role was like. And आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, आप एक जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें यू आर मोर लाइक अ पीएमओ. एंड पीएमओ रोल में क्या रहेगा, आपको वेंडर्स को भी समझना है, और आपको क्लाइंट, सो बेसिकली आर ब्रिजिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर्स, Okay. राइट. क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को डायरेक्टली नहीं उनको समझाने का वो है, they do not have time or they do not want to engage into this discussion. So that is why PMO is there. PMO is Mhm. there to have good discussion with the client, and when the client and PMO are in the right alignment, वो फिर PMO का काम है उनको आगे वेंडर को कम्युनिकेट करना, एंड यू PMO has to make the thing work, Okay. and client will only ask PMO what is the status of the task. Mhm. So that is like a very random and a very you are always on the toes, Okay. Yeah. especially because of client ki already you are there at the client site. It's not like a virtual role. Mhm. So you're there in person, and you have to be like always
confident about the task that has been given to you, जो आपका रोल है उसको लेके आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू ऑलवेज हैव टू प्ले द मैन। आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन नेवर डिसरिस्पेक्ट योर क्लाइंट, दैट ऑलवेज दैट यू नो दैट अप्लाइज टू एवरी अदर रोल एज वेल, बट yes, when you are there, your body is speaking as well and not just your words are there, so you have to be like really cautious about it. Ma'am, did you plan to become the consultant, or like did you choose any other field as well? No, I never planned to be a consultant, Sachin. Actually, I got a very nice intern. I was an intern at ABB, and that was like Mhm. a very nice role which I got. It was very much aligned to what my MTech Mhm. curriculum was. Mhm. So we were there. It was more under software engineering domain, and Mhm. I was, working with robots day in day out. We were working on जो backend पे coding रहता है robots का. That Mhm. उस project का I was a part of. But Mhm. they gave me a PPO as well, but that was in Bangalore, and Mhm. I did not want to continue in Bangalore. I wanted to have a job in Delhi NCR. So then I got another offer from PwC. Obviously that was not a very technical role which I was going to get. Consult being a consultant is not what बहुत Mhm. technical knowledge नहीं चाहिए उसके लिए. It's more like an MBA grad भी कर सकते हैं who do not come from a technical background, Mhm. but I thought to just give it a shot. Okay. Mhm. But So, somehow I thoroughly enjoyed doing it. so like which part of a role that you like the most? Did you like the coding or did you like the consulting? अब मैं कह सकती हूँ कंसल्टिंग. उस टाइम पे मुझे लग रहा था नहीं, आई शुड गो बैक इन टाइम एंड डू व्हाट आई वाज डूइंग, Mhm. बट नहीं. Like, कंसल्टिंग रोल इट्स ऑब्वियसली ये, क्योंकि मैं सिंस अब बहुत सालों से यही कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा Mhm. है कि यही ही सही है शायद. हो Mhm. सकता है अगर आप कोडिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, आप एक बार आपको कमांड आ जाती है अपनी लैंग्वेज पे, अपने कोडिंग स्किल्स पे, तो Mhm. आपका चाहे लैंग्वेज चेंज भी होती रहे कोडिंग लैंग्वेज, बट स्टिल यू हैव दैट The कॉन्फिडेंस. basics, yes. यस Mhm. यस, बट So, इन माय केस क्योंकि अब मैंने नहीं वो कंटिन्यू किया, तो आई ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ कि अगर मैं ऐसा mhm. जॉब शायद अब दोबारा ना कर पाऊँ. Yeah. So, ma'am, like, what skills do you believe are like essentials for the professional to develop in order to thrive the consulting role? If you can mention few. Skills per se, if I speak, obviously, technical Mhm. knowledge is a must. Mhm. If you get a chance to, get certain Mhm. certifications on cloud or machine learning or be it RPA, Mhm. you should definitely go for it. It's Mhm. always a good to have on your plate. Your Mhm. client will never ask कि आपके पास सर्टिफिकेशन है नहीं, बट इफ यू हैव इट, एंड क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट्स भी समहाउ क्लाउड पर हैं और आपको डेटा सेंटर्स पे काम करना पड़ रहा है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड टू हैव Mhm. skill. And also obviously managerial certifications जो हमारे रहते हैं like PMP or Prince 2, these are Mhm. also very much important again Yeah. if you want to Mhm. climb the ladder in your professional career. Yeah. So yeah, I think Mhm. and since now these analytics platforms, these business Mhm. intelligence platforms are in place, when I Mhm. was in consulting, these were not like really trending, but Mhm. the hype today is such that one Yeah. should have a good command on these ABI platforms. Yeah. So yes, getting a certification in Tableau or Power BI is I It's think must. wonderful. And like big data and Hadoop and all these things. Yeah, yeah, So, yeah, 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 yeah. mhm. Yeah, because So at like, the end it's more about how you present your mhm. uh, work. Like, so Work. if you have a good command on Power BI, let's say, Mhm. obviously your reporting skills would be great, Great. and present The your data storing telling would be easier. Like these are all the hard skills, ma'am. Like as the IT professional or as a IT graduate, like what is the role of learning the soft skills as well? uh, Obviously there are courses Mm, around you. You can mm, always go for any course that is available on LinkedIn or any other mm, platform, but mm, I somehow do not mm, have much faith on such courses. If mm, we talk about soft skills, it's mm, more like if you watch certain videos, content, read, mm, this is something that you can brush up
really well from such sources rather than watching videos Yeah. or watching or having those certifications. I really don't know if that works. It might work for someone, but watching good content, news channels or newspaper, reading newspaper, I think that is really good to have good, great, soft Yeah, skills because in my perspective. as a IT graduate, we only focus on the hard skill like learning the coding, Yeah, and yeah, like many as yeah. programming as we code Java, Python, C++, and all Yeah. these things. So in the long run, soft skills will definitely benefit. We will get a benefit from it. So Of course. this is not the thing that we should ignore and only focus on the I think hard skills, right? Very true. Because soft Hmm. skills is more like आपका product अच्छा है. But if the packaging is not great, Hmm. why would anybody want it? Yes. Right. Hmm. So आपका अंदर से प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, but for that, for Hmm. someone to open that box, वो Hmm. वो enthusiasm कैसे आएगा? So Yeah. soft skills I see as the packaging thing around you. Hmm. Hmm. How Okay. you say it, Hmm. आपको पता है, but how you say it, that is Hmm. another skill. Yeah. Okay. Exactly. So some हम लोग काफी इग्नोर कर देते हैं उस साइड को, Hmm. but that is actually equally important if we talk about any job role. Job. Yeah. So ma'am, I have a one follow-up question on this. Like I used to, on day-to-day basis, on daily basis, I used to spend about an hour on LinkedIn. You know, हम्म, LinkedIn पर तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो लोग जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि इनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मतलब बिग फोर आ रही है या फिर कोई अच्छी कंसल्टिंग फर्म विजिट कर रही है उनके कैंपस को, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर में हूँ एंड आई एम फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ पर बिग फोर विजिट ही नहीं करती है, लाइक दे यूज टू विजिट एनआईटीज आईआईटीज और टॉप बी स्कूल्स। मेरे कॉलेज में वो आ ही नहीं रही है। तो और मेरा ये मतलब मेरा फैसिनेशन है या मेरा इंक्लिनेशन है कंसल्टिंग में जॉब लेने का। तो मेरे लिए क्या एक रोड मैप रह सकता है, मुझे कैसे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए जिससे मैं बिग फोर में पहुंच पाऊं या फिर उससे भी बेटर कंपनीज में मैं अपना अपने आप को स्टेब्लिश कर पाऊं। सी अगर आपके कैंपस में कोई कंपनी नहीं आ रही है, ऑब्वियसली तब उस थ्रेशोल्ड को एक्चुअली क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट आई टोटली एग्री। अब सिंस उसके लिए दो वेज हैं, या तो आप अपना जो नेटवर्क है लिंक्डइन पे आप उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, and you reach out to people. Okay. LinkedIn पे आजकल people are very active when they post certain job opportunities. They give you their email addresses as well. Mhm. लेकिन that is to leverage LinkedIn or to leverage any such platform is another skill, is another art actually. People usually do not know how to set alerts for such roles. So Mhm. LinkedIn also gives you an opportunity जहां पर आपको एक, let's say मुझे डेटा साइंटिस्ट का एक रोल समझ में आ रहा है, वहां पर if you go into the bottom, तो वहां पर एक टॉगल, यू कैन जस्ट टॉगल द स्विच बटन, Mhm. एंड उसको आप अलर्ट ऑन कर दोगे तो आपको वैसे ही जॉब रोल्स के सजेशंस और आते रहेंगे एंड ईमेल्स भी आते रहेंगे। Okay. सो यू शुड नॉट मिस अ सिंगल चांस, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी वैसे ही बहुत रेयर हो गई है। Mhm. एंड आई थिंक इन माय मतलब पर्सपेक्टिव आई वुड से कि लेवरेजिंग लिंक्डइन यू शुड बी सो मच एक्टिव ऑन इट, तभी आप सीख पाओगे उस प्लेटफॉर्म को भी। Mhm. अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते जाओ, जो लोग अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उनसे कनेक्ट करते जाओ, एंड उनके जॉब पोर्टल्स देखते रहो उन ऑर्गेनाइजेशंस के। अगर आपके दिमाग में कोई एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है विच Mhm. माइट बी अ फिट फॉर यू, आप उसका जो जॉब पोर्टल है उसको यू शुड बी लुकिंग एट इट एट अ गुड फ्रीक्वेंसी। और Mhm. अगर आपको कोई जॉब रोल अलाइंड लग रहा है एज पर योर क्रेडेंशियल, यू शुड रीच आउट टू सम पर्सन Okay. जो आपको रेफर कर सके। अदरवाइज अप्लाइंग टू द जॉब रोल्स एंड देन गेटिंग अ कॉल, इट्स वो थोड़ा टफर है। Mhm. तो आप रेफरल्स के लिए ज्यादा फोकस कर सकते हो। Okay. एंड दूसरा इज इफ यू फील लाइक कि आपको यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, ऑब्वियसली गो फॉर हायर एजुकेशन। आई इन माय पर्सपेक्टिव, अगर आप बैठे हुए हो जॉब रोल के लिए एंड योर बीटेक इज यू नो
बीटेक प्रोग्राम भी आपका खत्म हो चुका है, दैट इज नॉट राइट. इससे अच्छा you should not waste the time and think of higher studies. You Got should definitely get a job post that, क्योंकि आप थोड़े mature हो जाओगे, आपका नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाएगा, you'll meet different people and aim for a better college then, so that you get a good job. Got it. Ma'am, moving on to another question. I was, going through your LinkedIn and I was, studying your academic background and your career switches और जो significant milestones आपने achieve किए हैं over the years. So one thing I have observed कि आपने ना खुद को कभी settle down नहीं होने दिया. You have, you know, keep on evolving yourself. So वो मेरे को आपका thought process समझना है कि व्हाट मोटिवेट्स यू, पहला कि और आप वो कैसे डिसाइड करते हो कि यार दिस इज द आइडियल टाइम फॉर मी टू स्विच. सो लाइक आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, योर थॉट्स ऑन करियर स्विचिंग एंड योर पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट. So in my first organization, I was, actually surrounded by some good experienced people, and they only told me that you should not settle down. You should not get, comfortable in certain role. If you feel like कि आपको यहाँ पर वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, please don't wait endlessly. Obviously, you should wait. You should have patience. But if you feel like कि नहीं, you want something else in your life, please don't sit. And it's more about randomness now. आप कितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, अपने आप को कितना ज्यादा रेलेवेंट रख सकते हो इन टूडेज टाइम, दैट Okay. इज मोर इम्पोर्टेंट. अदरवाइज फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आप अपस्किल नहीं कर पाओगे, और एक रोल पे आप बहुत ज्यादा सेटल हो जाओगे, तो हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए फिर उसके बाद कि नाउ आई कैन गो इनटू अनदर एनवायरनमेंट, गो इनटू अनदर इंडस्ट्री. So yes, I followed that mantra somehow, and I was lucky enough कि मेरे को opportunity उस टाइम पर वो मिल गई जब मैंने ढूंढी. Otherwise, I have seen people who apply for jobs and they still do not get calls, or calls do not get converted. So yes, coming back to when I was in PwC, I thought that this role is not something जो मैंने technical credential से gain किया है, मैं वो यहाँ पर leverage नहीं कर पा रही हूँ. I did some certifications as well, RPA भी किया अपने आप को relevant, so that I'm little relevant in the industry. But मेरा job role ही वो demand नहीं कर रहा है. So what about the certification then, right? Okay. Then I thought I should not just wait, क्योंकि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, एट द एंड आप करोगे तो फिर वो क्लाइंट कंसल्टिंग ही वो आपका कोर है उस Mm-hmm. रोल का. आपका कोर रोल आपको टेक्निकल चीजें पढ़ना नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो, बट दैट इज समथिंग ओवर एंड अबव. Mm-hmm. देन आई लुक्ड आउट फॉर दी अपॉर्चुनिटीज जो थोड़ी टेक्निकल डिमांड करें, बट देन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोडिंग का मेरे पास अब वो स्किल नहीं था, बिकॉज दैट वाज लाइक 2 years later when I was searching for jobs, Mm-hmm. और मेरा कोडिंग 2016 में ही छूट चुका था. सो आई वाज लुकिंग आउट फॉर जॉब्स जिनमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड हो बट कोडिंग की ना हो. Okay. So that was little niche. Then somehow I got a call from CPA Global, which is now Clarivate, एंड उसमें मेरे को टेक्निकल पूरा फिर मैंने ब्रश अप किया, मेरे जितने भी मेड इजी के नोट्स थे वो वापस से ओपन करके, एंड देन आई रेड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स. Mm-hmm. Then I went for the interview and I got the offer. So yes, वो वहां पर जो मैंने फिर आईपी रिसर्च में सीखा, दैट वाज मतलब मैं आई कैन नॉट थैंक कि मैंने जितना वो सीखा, दैट दैट इज समथिंग आई कैन नेवर लर्न अगेन, क्योंकि दैट वाज वेरी नीश, द इंडस्ट्री वाज वेरी नीश. बट उसमें रोज हम कुछ ना कुछ नया टेक्निकल जो अभी लॉन्च भी नहीं होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी, अभी एक पैटेंट में वो लिखने वाले हैं, फाइल करने वाले हैं, हम वो पढ़ रहे हैं. दैट Okay. वाज ग्रेट. इट वाज लाइक हम फ्यूचर में जी रहे हैं, Mm-hmm. राइट. सो यस, वो बहुत अच्छा था. बट क्योंकि मैं कंसल्टिंग से आ रही थी, तो मेरे को हर टाइम एक कॉन्शियसनेस रहता था कि अगर लेट्स से मेरे क्लाइंट ने ये पूछा है, तो आई ऑलवेज थॉट ऑफ वेयरिंग द क्लाइंट्स हैट. And in my deliverable, when even if I am writing, I am preparing a doc, I always thought कि let's wear the client's hat first, and
see from their lens. क्या Mhm. मेरा response ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? Is it like too wordy, too Okay. lengthy? Is my articulation right? So yes, वो मेरे को consulting से आया. Okay. Then Gartner was something जिसको मैं पहले से ही, it was like my आप कभी कभार एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम कर रहे होते हो. Mhm. So that was like my organization. Gartner was that organization for me. उसके लिए मैंने एक बार PwC में भी इंटरव्यू दिया था. I could not get it. फिर उसके बाद मैंने 2 बार when I was in Clarivate मैंने तब भी इंटरव्यू दिया था. I could not get it. So Okay. that was like 4th time में almost मैंने वो क्रैक करा. Oh, great, great. So that is again a learning for people who are watching it or listening to it कि if you will see my applications जो Gartner के पोर्टल पे हैं, these are 21 in number. So that is the number जितनी बार मैंने अप्लाई कराया या रेफर करवाया अपने आप को, एंड 4 times मैंने इंटरव्यू दिया है. तो 4th time was the one जब क्रैक हुआ वो. So obviously I value this role a lot, and it's more like यहाँ पर भी since I could get this role because I was coming from consulting and I was having technical research background. Mhm. So this role is a mix of both. Okay. So I am really thankful for my past jobs. Great, great. Like I also got rejected from Gartner 3 times, maybe the same number for me as well. Great. Just let me know when you want to, get referred. Yeah, sure, sure. So, ma'am, like I have one question, ma'am. So, as you know that on our channel Beyond the Ranks, we always call the people who are like drive by the success or drive by the growth, who are a real life hustlers. So, ma'am, there is always a debate between the hustle and the work life balance. So, any person can do both of these things. Like any person could have the balance between the hustle and the work life, or is it just a myth? Having an equilibrium is something that is too ideal Hmm. in my sense. Hmm. I don't know. There are days when you have that equilibrium, but there are days when it's really, rushy. Yeah. Be it any firm. I'll not blame the firm here or the organization here. It's more like because आपके पास एक personal baggage भी आ रहा होता है. अब let's say आप weekend पे you have spent more time with your family. So Hmm. Monday is like something जिसमें आपके पास Yeah. the headspace is more occupied by your personal things Hmm. than Yeah. professional things. But then once you get into the middle of the week, तो आप Hmm. काफी अपने प्रोफेशनल उसके लिए इंक्लाइन हो चुके होते हो, क्योंकि आपने अपने कॉलीग से बात कर ली होती है, आपको कुछ Hmm. अच्छा लगा होता है, आपने कुछ डिलीवरेबल्स भेजे होते हैं, क्लाइंट अप्रिसिएशन आया होता है. सो यू आर मोर टुवर्ड्स द ऑफिस Yeah. देन पर्सनल Personal. Yeah. Hmm. थिंग्स. सो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है मोस्टली. फ्राइडे आते Hmm. आते तक आप फिर पर्सनल इंक्लिनेशन ज्यादा आ जाता है. Hmm. So, ma'am, like, ऑब्वियसली हसल तो होगा ही. आई Yeah. डोंट नो वी शुड कॉल इट हसल और इट्स Hmm. जस्ट अनदर डे. काम Like. है तो करना ही है. वी हैव Hmm. मेड अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ गेटिंग इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन और दैट रोल. और Hmm. जब आप हसल में काम करते हो, आई थिंक आप सीखते बहुत ज्यादा हो. जब Yeah. आपके पास पूरा दिन होता है और काम बहुत कम होता है, मेरा हमेशा स्पिल होता है. Hmm. Hmm. बट जब मेरे पास काम ज्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो मेरा कभी भी स्पिल नहीं होता है. Yeah. Like it's a basically hunger for a growth or being the comfortable with your life. So it's a versus situation. So. Yeah. Hmm. so, ma'am, I think we are approaching the last to the last question. So you can just quickly tell about your overall personal and monetary wise growth which you have achieved over the years. So this is going to be our last question from our side. Okay. I would not be able to get into much details on the numbers, but yes, obviously, first and the foremost benefit of switching the jobs is financial growth, and it's up to you how much you can, raise the bar. Yeah. Okay. You can, get it 4x, 5x, even 10x. I have seen people, achieving it. So it's, you have to be smart enough. How relevant are you? What kind of job role are you searching for? If you are gonna have, let's say, if I am going to, switch into another similar role, it's highly likely that I might not get
much, or I am switching into some role which is not a it's not a very big organization. Obviously there are times when you choose the role over the organization, there are times when you choose the organization over the role. uh, so in my sense, you should always, strive for what you want from that role, and financial growth is something that will always follow. Okay. Obviously the you search for you search on Google कि उस जॉब रोल पर हमको कितना यूजुअली एवरेज पैकेज क्या होता है, आप कोट ही उतना करोगे, राइट? बट अगर Mhm. आपका ऑलरेडी करंट पैकेज ही थोड़ा कम है, आप बहुत ज्यादा कोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूजुअली देयर इज अ बिग विंडो। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट है, उसमें वो एक बहुत बड़ा विंडो होता है, समवन कैन बी एट दी लोअर एंड ऑफ इट, समवन कैन बी एट दी हायर एंड ऑफ इट, Mhm. राइट? वो वहां पर वो बहुत एवरेज बता रहे होते हैं गूगल पे, बट यू शुड नो योर वर्थ, Okay, got राइट? it. सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। Okay. Thank you so much for for that response, ma'am. So I think that was all from our side, from me and from my and Sachin side. So ma'am, it was overall a great learning experience for both of us, and I personally believe कि जो भी viewers जब ये video हम post करेंगे, viewers देखेंगे, so they will definitely learn a lot from your experience about your journey, from your journey कि आपने switch करके आपने कैसे you have achieved such a great heights, plus जो भी आपने रोड मैप बताया, प्लस जो भी आपने टिप्स दिए कि कैसे सेटल डाउन नहीं होना है, और जो भी आपने अपना जर्नी से शेयर किया, आई पर्सनली बिलीव कि बहुत कुछ व्यूअर्स को सीखने को मिलेगा, नॉट जस्ट दी कॉलेज ग्रेड्स, लेकिन जो लोग अभी किसी पर्टिकुलर जॉब में सेटल डाउन हो गए, या फिर दे आर इन अ डायलेमा कि यार क्या मैं मुझे स्विच करना चाहिए या मुझे स्विच नहीं करना चाहिए. सो इट वाज ओवरऑल एन अ ग्रेट लर्निंग experience for me and as well as for Sachin. So thank Yes. you so much, ma'am, for being on our show. So Thank you, Thank you ma'am. so much, Lavin and Sachin, for having me. I think I had a great time, and you get very rare times like this when you can have a very candid conversation, and you are always like aiming for future. You tend to lose the track how you evolved. yeah. So there are some days when you crib about, oh ये तो मुझे नहीं चाहिए था, but आपने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया था, somehow we forget it. Mhm. Yeah. So yes, thank you for double clicking on it, and I just want to tell people, just please be random, be relevant, and it's the only thing that you can do. जितना आप relevant रहोगे मार्केट की डिमांड के साथ, टाइम की डिमांड के साथ, उतना ही ग्रोथ अचीव हो पाएगी. So yes, all the best for everyone, and please feel free to reach out. Yeah. Yeah. I'll share आपका LinkedIn handle and Sachin का भी और मेरा भी, so our viewers can reach out to you, Sachin or me. So thank you so much, ma'am, once again. So to all the viewers watching our video, it's my humble request to please keep supporting us. Do follow our channel, Yes. like and subscribe. Have a wonderful day. Bye bye.